Today we are going to start the next chapter, that is cardiovascular physiology or the physiology of the cardiovascular system. ठीक है, तो हम जो है ना वो सीक्वेंस के साथ इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो before we go into the deeper discussions, first we should know a little bit about certain definitions related to cardiovascular system or cardiovascular physiology, right? Okay, ये कुछ टर्म्स जो हैं ये आप लोगों को आती भी होंगी. ठीक है, और अभी हम जरा इसको डीपली लेके चलेंगे with respect to the cellular mechanics, right? Okay, physiology of the cardiovascular system. Cardiovascular आप लोगों को already idea है, because when I was discussing the anatomy of the cardiovascular system, I told you people a bit about the introduction of cardiovascular, right? Cardio means heart and vessel mean blood vessels. So this whole system associated with the blood vessels and heart is cardiovascular system. First we will discuss certain definitions, right? First one is the heart rate. I will write definitions. Heart rate. It is the number of beats. It is the number of beats of heart per minute. एक मिनट के अंदर आपका हार्ट जितनी मर्तबा धड़कता है. ठीक है, धड़कता है का क्या मतलब, व्हाट इज मीन बाय दिस धड़कना? धड़कना मीन्स contraction and relaxation in 1 minute is heart rate, right? And normal heart rate is normal. नो, बिकॉज फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. मेनली आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि फिजियोलॉजी में हम मेनली फंक्शंस को डिस्कस करते हैं या कोऑर्डिनेशन को, ठीक है, ऑफ द बॉडी. ये सर्टेन पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं. और एनाटॉमी में किसको डिस्कस करते हैं? स्ट्रक्चर्स को. ओके, अब जो नॉर्मल हमारी जो हार्ट रेट है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट इज 70 बीट्स पर मिनट. नॉर्मल हार्ट रेट. एच आर मीन्स क्या होता है? हार्ट रेट. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज हार्ट रेट, राइट? Normal heart rate is 70 beats पर मिनट. मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब है कि आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर 70 मरतबा धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है 1 मिनट के अंदर. ये हार्ट रेट है, राइट? अभी हम जरा सिंपल लेके चलेंगे चीज़ों को, फिर आहिस्ते से जैसे आगे मूव करेंगे. व्हेन वी विल मूव फर्दर, नाउ द थिंग्स विल बी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम. it is the amount of blood. It is the amount of blood. It is the amount of blood pumped by each ventricle in one beat. ठीक है, इसका ये मतलब है कि एक मरतबा आपका जो हार्ट है जब वो बीट करता है, ठीक है, या जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यू पीपल कैन से दैट व्हेन इट इज अंडर द फेज ऑफ सिस्टोली और सिस्टोल, और यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन. तो जाहिर सी बात है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपके वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है. ओके, वेंट्रिकल्स ब्लड को इजेक्ट करते हैं या पंप करते हैं, ठीक है, या परफॉर्म करके उसको अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, तो एक बीट के अंदर, ठीक है, एक बीट के अंदर आपके वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकल जाता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. एंड द एवरेज जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, एसवी भी इसको कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम.
The average stroke volume is more or less is 70 to 80 ml per beat. ठीक है, इसमें दैट कि आपकी जो एक बीट के अंदर आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, व्हेन दोस वेंट्रिकल्स आर गोइंग टू परफॉर्म और दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, they are going to eject 70 to 80, this is the range, 70 to 80 ml from them during their contraction. So that is stroke volume. और कब? पूरे साल में? नो. पूरे महीने में? नो. बल्कि एक बीट के अंदर जितना निकल जाता है वो क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट? ओके, नेक्स्ट इज द कार्डियक आउटपुट. नेक्स्ट इज द कार्डियक आउटपुट. These are very important terminologies. These terminologies are very important with respect to second year pharmacology and for Viva and many other things. Okay, it is, it is, okay, it is the volume, it is the volume of blood, it is the volume of blood pumped by, pumped by each ventricle in 1 minute. It is the volume of blood pumped by each ventricle in 1 minute is the cardiac output. There is a difference. Listen, cardiac output is also written as CO, cardiac output, right? It is the volume of blood pumped by each ventricle in 1 minute. ठीक है? ओके. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था? एक बीट के अंदर जितना पंप हो रहा था. ठीक है, देखो, इन द स्ट्रोक वॉल्यूम आपके वेंट्रिकल इजेक्ट कर रहे हैं. कार्डियो आउटपुट में भी क्या है? वेंट्रिकल्स आपके इजेक्ट कर रहे हैं. द डिफरेंस इज स्ट्रोक वॉल्यूम में एक बीट के अंदर जितना निकल जाता है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. कार्डियो आउटपुट में एक बीट हुई निकल गया, दूसरी बीट हुई निकल गया, तीसरी बीट हुई निकल गया, ठीक है, चौथी बीट हुई निकल गया. तो इसका मतलब ये हुआ, लिसन एंड रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई से इफ आई से कि अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम, आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं, यू पीपल कैन आल्सो राइट कार्डियो आउटपुट इन दिस फैशन. कार्डियक आउटपुट is equal to stroke volume multiplied by heart rate. देखो, जब आप 1 मिनट के अंदर, ठीक है, लिसन, 1 मिनट के अंदर हर बीट में से निकलने वाले ब्लड के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कार्डियो आउटपुट आ जाएगी. जाहिर सी बात है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? वो 1 मिनट बीट के अंदर है. ठीक है, जब उस स्ट्रोक वॉल्यूम का हम 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट हार्ट रेट क्या होती है? 1 मिनट के अंदर, ठीक है, जितनी बार वो बीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप उसके स्ट्रोक वॉल्यूम को उसकी हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आपको बस कार्डियो आउटपुट आ जाएगी. सही है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्शन होती है, मतलब कि जितना ब्लड निकल रहा है, और हार्ट रेट क्या है? 1 मिनट के अंदर जितनी बार बीट कर रहा है, और कार्डियक आउटपुट क्या है? एक बीट के अंदर जितना पंप हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह कार्डियक आउटपुट का फार्मूला क्या है? द फार्मूला फॉर कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट. ओके, एंड द नॉर्मल cardiac output is about 5.5 लीटर. ठीक है, 5.5 लीटर जो ब्लड है वो आपका जो हार्ट है 1 मिनट के अंदर क्या करता है? इजेक्ट करता है. तो दैट इज कार्डियक आउटपुट, दैट इज कार्डियक आउटपुट, डेफिनेटली कार्डियक. ओके, अब आपको पता है, लिसन एंड रिमेंबर, आप लोगों को पता है कि आपकी जो कार्डियक आउटपुट है, यू पीपल्स कार्डियक आउटपुट इज इज डिपेंडेंट ऑन, is dependent on two factors, stroke volume and heart rate. Stroke volume and heart rate. No, you people have to tell me. Listen and remember. You people have to tell me if you people's heart rate is going to be raised due to any reason. What would be the effect of heart rate on cardiac output? Either it will be increased or decreased. If your heart rate uh, increases, आप लोग बताओ. यू पीपल हैव टू टेल मी. अगर आप लोगों का हार्ट रेट बढ़ जाए, आप लोग 1 मिनट के अंदर 100 मरतबा अगर आपकी बीट्स हो जाए,
जो कि अभी हमने पढ़ी है। नॉर्मल कितनी है? 72। ये वैसे नॉर्मल एक रेंज बताई है मैंने, 70 बीट्स पर मिनट, ठीक है। 60 से 100 तक की एवरेज होती है, लेकिन ये आप लोग एक स्टैंडर्ड समझ लो। अच्छा, अगर आप लोगों की क्या हार्ट रेट बढ़ जाए, हार्ट रेट बढ़ जाए, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कार्डियक आउटपुट? Yes, exactly. Your cardio output will be increased. Definitely, in 1 minute, your beats number goes up. Your beats number goes up. ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपके जो बीट्स के नंबर हैं वो बढ़ गए हैं, दैट इज हार्ट रेट। हार्ट रेट बढ़ गई तो आपका जो है वो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ओके, एट द सेम टाइम लिसन, एट द सेम टाइम इफ यू पीपल्स stroke volume is going to be raised, what will be the effect on cardiac output? Everybody has to answer in the chat section. What will be the effect? Because we are concerned here with the physiology, so the session should be interactive, right? आप लोगों ने भी मेरे साथ चलना है। यस श्योर। तो अगर किसी वजह से आप लोगों की हार्ट रेट बढ़ जाए और या किसी वजह से आप लोगों की स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाए, तो क्या होगा? डेफिनेटली यू पीपल्स कार्डिक आउटपुट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज regulation of cardiac output, regulation of cardiac output, okay. As you people know that heart rate, who is the controller of the heart rate? कौन सा हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है? इन द हार्ट, वैसे तो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है हार्ट रेट को, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इफ आई आस्क यू पीपल हु इज द कंट्रोलर ऑफ द हार्ट रेट इन द हार्ट, व्हाट इज द आंसर? हार्ट रेट को कंट्रोल कौन करता है? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, हु इज गोइंग टू कंट्रोल द हार्ट रेट? कौन कंट्रोल करता है? एसए नोड, एग्जैक्टली, यस, एग्जैक्टली। एसए नोड इज द कंट्रोलर ऑफ द हार्ट रेट। आपको पता है एसए नोड इज द जनरेटर, एसए नोड इज द जनरेटर और इनिशिएटर ऑफ द हार्ट रेट। एसए नोड, एसए नोड, राइट। And you people know that, let's suppose for example, uh, this is the SN node, ठीक है, and from here there is uh, internodal fibers are going to be originated and they are going to merge at the point of AV node. This is the AV node and this is the SN node, and after that you will know bundle of His is going to be formed, and then left bundle branch, then left or right bundle branch, then Purkinje fibers, right? No, this is the SN node, and you people know that this SN node is basically is under the control of autonomic nervous system, ANS, ANS, autonomic nervous system. And in autonomic nervous system, you people know that there are two systems that are going to control your ANS functions in the body. Okay, and these two systems are sympathetic system and the parasympathetic system. Sympathetic, sympathetic, and the second one is parasympathetic, right? अब ये sympathetic और parasympathetic are going to control this autonomic nervous system. ANS दो डिवीजन में होता है, सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक जो है उसके भी न्यूरॉन्स होते हैं एसए नोड के ऊपर, ठीक है। ये देखो, ये एसए नोड के ऊपर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है, ठीक है, और ये एसए नोड के ऊपर क्या है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। आप लोगों को पता है कि जो सिंपैथेटिक के जो फाइबर्स हैं वो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं, क्या कहते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन। और जो पैरासिम्पैथेटिक हैं वो क्या रिलीज करते हैं? एसिटाइल कोलिन, वो क्या रिलीज करते हैं? ACH। ठीक हो गया। अभी जनरल से सुन लो कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एसए नोड के ऊपर एसिटाइलकोलिन को रिलीज करके क्या करता है? हार्ट रेट को कम करता है, ओके। एंड ऑन द अपोजिट साइड, the sympathetic neurons by releasing norepinephrine on the SA node are going to increase your heart rate. ठीक है, it means that
जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर हार्ट रेट, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट इज गोइंग टू डिक्रीज योर हार्ट रेट। कैसे, ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी, इफ यू पीपल रिमेंबर। ओके, अभी मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कैसे। नॉरएपिनेफ्रिन norepinephrine is going to activate beta 1 receptors, beta 1 receptors on the SA node, and then increase the heart rate. अब बीटा 1 रिसेप्टर कैसे होती है वो आप लोगों को आना चाहिए। और एसिटाइलकोलिन क्या करती है, बाय एक्टिवेटिंग द M2 receptors, M2 receptor it is going to decrease the heart rate. Okay, so definitely these two systems are going to control this cardiac output, ठीक है। जहरी सिर्फ अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ हार्ट रेट के बारे में बताया, डेफिनेटली स्ट्रोक वॉल्यूम भी है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कौन सी वजह से। तो अभी आप लोगों ने याद रखना है कि कार्डिक आउटपुट जो है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कब, जब हार्ट रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और हार्ट रेट के ऊपर कब इफेक्ट पड़ेगा, जब आपका ANS डिस्टर्ब होगा। जब आप लोग फाइट और फ्लाइट स्टेशन में चले जाएंगे तो आप लोगों की कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी। जब आप लोग पैरासिम्पैथेटिक में चले जाएंगे तो आप लोगों का जो है कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, बिकॉज योर हार्ट रेट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। नो डाउट स्ट्रोक वॉल्यूम इज आल्सो गोइंग टू प्ले a role in the output of हार्ट, दैट इज कार्डिक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम का भी रोल है, हार्ट रेट का भी रोल है, दोनों में से जो भी फ्लक्चुएट होगी अब कार्डिक आउटपुट डिस्टर्ब हो जाएगा। सो द लेक्चर इज ओवर।